Cosmo people, helping change. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Hi everyone, I welcome you all again. It's been half day. We have seen multiple experts from the industry and they have shared their insights about the career in Bollywood industry. Now this is the second half of our complete event. The Ticket to Bollywood is a career guidance summit for aspirant professionals and also for models, actors, directors, writers, makeup artists, and film crew. For this session, we have eminent guest with us, whose name is Indraneel Nukte. He is cinematographer, editor, camera, and electrical department he handles regarding the film production part. And Indraneel is also known for his projects Unmat in 2019, Blue Jeans, Blues, and Kal. So let's welcome Indraneel Nukte. Welcome to our session, sir. Thank you. वी हैव वन मोर गेस्ट वो बैक स्टेज है बट अभी हमारे साथ पूरी तरीके से ओके नाउ शी इज हियर हाय शिवानी Hi. Hi. या welcome to the session number 7 unveiling the art of filmmaking. What we are going to see into this session, it will be dive into the captivating world of filmmaking with insights from industry experts. Whether you are dreaming for the direction, production, or scripting, this session offers a comprehensive exploration. So I welcome both of you and to share your insights for this wonderful session. We have introduced Indraneel. Now I will introduce Shivani. Shivani Mehra, and she is a director and writer with almost 10 years of experience. Her short film Highway Nights made it to the 95th Academy Awards and won a Dada Saheb Phalke Award. I welcome Shivani to the session. Welcome, Shivani. Hello. Thanks for having me. Thank you so much for your time, and we are really looking forward for your insights. I'm actually on a shoot today, so I had to. I'm in a classroom, if you can see. I can totally understand. In fact, when we Yeah. decided to have you at the session, you told me, but I can see the gist and the enthusiasm in you that you want to be a part of the events and the projects where aspirants are really
require such kind of information so that they can implement and they can grow into their own career. So thank you so much. That you're welcome. अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ये सेशन के लिए. मैं इंद्रनील को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस के लिए शेयर कीजिए. इंद्रनील नुक्ते. ओके सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इंद्रनील है। मैं डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर एंड एडिटर हूँ। अब तक मैंने 3 मूवीज एज अ डीओपी वर्क किया है जो रिलीज हो चुकी है। द वन इज उन्मत्त, देन ब्लूज एंड ब्लूज एंड वन इज कार। एंड माय ओन 2 short films are on MX Player. The one is Atrupta and hello. You're audible, Hello. Indraneel. Yeah, sorry, I was on mute actually. Yeah, no issues. So I would like to invite Shivani. Shivani, can you just brief about your profile so that the audience can know you better? Sure. My name is Shivani Mehra. I'm not from Bombay, but अभी तो almost 10 साल हो गए that I've been in Bombay. And as everybody keep asking, and actually I met somebody today who asked if they should move to Bombay if they have an aspiration to be an actor. And I always say कि whatever your heart says, you should follow. And I think that's what I did. I have I started as as an assistant director, and then I got into advertising and became a producer. I have been writing from a very long time, and I just directed my first short film as well. So I think, yeah, that's about it. It's been a wonderful journey, learning, writing, reading, all of that. You're Rimay, on mute you're again, muted Rimay. now. Yeah, sorry. So we'll just go ahead with the next things. इंद्रनील से मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या मोटिवेशन था कि आपको डीओपी में करियर परस्यू करना है या फिर ये इंडस्ट्री में आपको काम करना है. तो क्या मोटिवेटेड थिंग था या ऐसा कुछ कोई लोग होंगे जिसने आपको मोटिवेट किया होगा, इंस्पायर किया होगा कि आपको ये करियर करना चाहिए, या फिर सेल्फ मोटिवेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके अंदर आप खुद डिसीजन लेते हो कि आपको आपके लाइफ में क्या करना है. तो क्या मोटिवेशन था आपको ये फील्ड में काम करने के लिए? यस, सो पहले तो मैं फोटोग्राफर था। एज अ फोटोग्राफर में काम करता था। देन मुझे लगा वीडियो में भी कुछ करना चाहिए, वीडियो मेकिंग सीखना चाहिए। सो मैंने फिल्म मेकिंग का एक डिप्लोमा किया। और इट्स इट्स अबाउट मी फॉर लाइक इमेजिनेशन। ये फिल्म मेकिंग वर्ड जो है वो कंप्लीटली इमेजिनेशन पर है। आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है या फिर आपको कोई टॉपिक मिलता है, तो उसे आपको पहले इमेजिनेशन एंड प्री प्रोडक्शन करना पड़ता है। सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसमें, इसलिए मुझे काम करने में और इसमें करियर करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। दैट्स रियली ग्रेट. मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है अगर आपको किसी भी फील्ड में, ना ही सिर्फ फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, लेकिन अगर आपको करियर किसी भी इंडस्ट्री में करना है तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए. से सेल्फ एक नॉलेज सेट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, जिसके साथ अब अगर आप इंडस्ट्री में अप्रोच करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. Shivani, the same questions comes to you. I want to ask you that आपने जब शुरुआत की थी ये फील्ड में काम करने के लिए, तो ऐसे कौन से लोग थे या कौन सी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया एंड यू स्टार्टेड वर्किंग इनटू दिस जर्नी? I think I always had that in me where you want to tell a story, where you want to say what is in your head as a visual representation. So that is what inspired me. But when as I grew up, I saw this film Dil Chahta Hai, and I realized how a director's vision of a simple story in their life can be seen again when they make it as a film. सो इट कॉन्स्टेंटली इंस्पायर्स मी कि एक दिन एक रात जो मेरे दिमाग में एक आइडिया था, when I see it as a film on a very big screen, I realize that, I'm reliving a moment which was just a thought in my mind at one point. So as filmmakers, we have this ability
to share with the world our vision, our ideas, our stories. And I think that's a very big thing and very influential role. And it comes with a lot of responsibility because आपका mindset, whoever is going to see your film or get inspired or whatever by it, they're going to get motivated by you. And I think that matters a lot for me as a person, and that made me come into this field. You're on You're on mute, mute Rimay. again. सॉरी। सो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि अगर आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, अगर काम करना है, तो आपको एक स्किल्स को एक्वायर करना जरूरी है। वो स्किल के साथ अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो काफी सारी चीजें आपको सपोर्ट भी करेंगी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से चैलेंजेस थे इनिशियल करियर में, कि जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या चैलेंजेस फेस किए, वो चैलेंजेस को आपने किस तरीके से सॉल्व किया, रिजॉल्व किया, और जो एस्पिरेंट लोग हैं जिनको करियर करना है आपके फील्ड में, तो वो लोग किस तरीके से अप्रोच करें ये इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम शिवानी फर्स्ट। Aspirations and talents. See, I think the challenges that I felt were to crack into the industry, like making contacts. I mean, you must have heard that contacts work multiple times, but making contact is the most difficult part. Once you get into it and you start knowing 2 people, 3 people, 4 people, and then they keep connecting you for more work, it gets easier. But getting into it, having the right mindset, and also knowing that, I exactly want to be this person, or I exactly want to be a director, or I exactly want to be a DOP or an editor, is I think it is more difficult than we think it is. It is not as easy to. I have seen so many people, me considering, I mean, me as well. I started as a thought, मुझे सिर्फ direction. But then when I came here, I started learning more. I started working with people. I realized that I also want to learn how production is done, or I am really interested in how editing is done. And honestly, it has helped me. And I have given time to learn all these things, all these talents. And yeah, I think contacts and knowing what you really want is one of the biggest challenges that I think I face, and many people who I see aspiring to be in the industry, they face as well. So yeah, I think these two for sure. एग्जैक्टली मुझे इसी के रिलेवेंट आपको सवाल पूछना है कि जैसे आपने कहा कि नेटवर्किंग करना जरूरी है, कांटेक्ट करना जरूरी है, ये तो हम लोग ये बताए कि क्या करना है, बट ये कैसे करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द एस्पिरेंट वर्क। Yeah. तो मुझे उसके बारे में जानना जरूरी है। Yeah, honestly, it's really difficult. Sorry, it's easier today. Not difficult. It was difficult way much when I was in college and I wanted to start something new. But I think बेशर्मी बहुत जरूरी है. So with a very open mindset, you need to approach people. Out of 10, 7 will definitely put you down and say no, but those 3 will reply, and they will push you forward to do something better. You can try, honestly, you can write mails, cold mails, you can pick on people, you can just like get numbers from somewhere if you can, or emails from LinkedIn or Google for that matter, and start writing to these people. I have done it multiple times where I connected with people on LinkedIn and started speaking to them, told them who I am and what I wanted to do, and it worked for me. अगर कोई बोलता है कि अच्छा, I can't help you right now because I don't have anything for you, always ask a follow-up question that says, if you can't help me, who can? Most of the people will give you a lead, and that will expand your network. Try to meet people on weekends, or try to meet people every now and then wherever you can meet them in person, because nothing like a personal meeting. So these are couple of ways how can you connect. Second is work on yourself. I mean, this is the most difficult one. Work on yourself as in make your personal brand, who you are exactly. If you're a filmmaker, start taking your Instagram photographs or Instagram stories as filmmaking as well. So I mean, don't hide your talent. Show off your talent. Be boasty. Be a little besharam, as I said. So show it off as much as you can. Not in a bad way, of course, but in a decent way.
let people know, that you're worth what you're doing or asking for. I think this is how I have cracked a few things that I have cracked in my life by talking and reaching out on different social media platforms as well. एग्जैक्टली मतलब जो परफेक्ट वर्ड था एक्चुअली आपने सही से कहा कि बेशर्म होना भी जरूरी है। अगर आप बेशर्म नहीं बनोगे और आप हेजिटेट करोगे किसी और इंसान के साथ कनेक्ट करने के लिए, इट इज नॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री ओनली, इनफैक्ट ये इंडस्ट्री में तो और ज्यादा डिमांड है इस चीज को Yeah. लेकर। जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे लोगों के साथ, कॉन्टेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो ये Right. बड़ा ऑब्वियस है, विच इज रियली गुड। इंद्रनील, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एज अ डीओपी जब आपने काम शुरू किया था तो आपने अप्रोच कैसे किया? अलग अलग मतलब डायरेक्टर से किया, प्रोडक्शन हाउसेस से किया, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ किया, या कौन से माध्यम से जिसके थ्रू आपने कांटेक्ट किया था, और प्रोजेक्ट्स कैसे आपने लिए थे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इन एज अ डीओपी प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। आप ही लाइक उनको आपको कुछ ना कुछ भेजना होता है। जो भी आप कांटेक्ट अगर आप करते हो किसी को भी, तो आपको आपका शोरील वगैरह कुछ ना कुछ भेजना होता है। सो आपके पास वो होना पहले ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ें अगर आप कंप्लीट करते हो अच्छे से, उनको सॉल्यूशन कैसे वो अगर आप ढूंढते हो, पहले खुद पे प्रैक्टिस करो। खुद पहले उतना कैपेबल बनो, देन आप लोगों को मिलो। मेरा तो एडवाइस यही रहेगा, क्योंकि अगर आप एस्पायरिंग हो और नए हो और आप डायरेक्टली अगर लोगों को मिलोगे तो आपको लाइक आपके दिमाग में जो है वो आपको शायद ना मिल सके। बट आप खुद प्रैक्टिस करते हो और आपके स्किल्स इंप्रूव करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस मिलेंगे। मुझे तो वैसे ही मिला है। लाइक मैंने पहले शुरुआत में जो प्रोजेक्ट्स किए, वो प्रोजेक्ट्स आगे दिखा के या फिर उनके कॉन्टेक्ट्स थ्रू हमें मिलता है कि अरे नहीं ये बंदा अच्छा करता है, इसे लो। सो या कॉन्टेक्ट से तो मिलता ही है, बट आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी खुद पे, तभी आप कॉन्टेक्ट्स अचीव कर पाओगे। यू आर अगेन ऑन म्यूट। पहले कोई सेशंस हुए थे उसके अंदर भी हमने नेटवर्किंग के बारे में जाना। काफी सारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, देन ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट वगैरह जो है, जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं या मार्केट करते हैं। अभी अपकमिंग सेशन भी हमारा सेल्फ ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग के ऊपर स्पेसिफिकली ओरिएंटेड है, क्योंकि फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो स्पेसिफिकली इस फैक्टर के ऊपर काम करती ही करती है। अगर आप लोगों को दिखेंगे नहीं, आप बिकेंगे नहीं, विच इज वेरी सिंपल स्टेटमेंट। और शिवानी ने जो राइटली कहा कि आज के जो माध्यम है या जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कनेक्टिविटी है, और दैट टू इट इज नॉट लिमिटेड टू द जोग्राफिकल लोकेशन। यू कैन कॉन्टेक्ट टू एनी वन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन अप्रोच देम इफ यू हैव द टैलेंट। जैसे इंद्रनील ने भी कहा कि आप आपके प्रोजेक्ट्स रेडी रखिए। अगर आपको कमर्शियली मार्केट में जाना है तो आप आपके प्रोजेक्ट्स रेडी रखिए, आपका पोर्टफोलियो, शो रील जो भी है उसको क्रिएट करके रखिए, एंड स्टार्ट शूटिंग इट टू मल्टीपल पीपल, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कभी ना कभी कहीं ना कुछ तो क्रैक जरूर होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका काम पहुंचाइए, और ये पॉसिबल आज की डेट पे हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण। मैं शिवानी को क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि चैलेंजेस तो हर एक को आएंगे लाइफ में। अगर करियर भी इसमें करना है तो काफी सारे चैलेंजेस लोग फेस करेंगे। तो ये चैलेंजेस के लिए कहीं पे ऐसा इंस्टीट्यूशन है, या कहीं पे रिसोर्स है, प्लेटफॉर्म है, मेंटोर्स है, कि जिनके साथ लोग जुड़ सके, और अगर डायरेक्शन में करियर परस्यू करना है तो क्या इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेज है उसको ऑप्ट किया जाए? विच आर द इंस्टीट्यूट्स जहाँ से रिसोर्समेंट हो सकता है, सीख सकते हैं ये स्किल सेट्स, और इसको कमर्शियली अगर लेके जाना है, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो जो भी चैलेंजेस फेस आता है, जैसे कि लोगों के पास आपके लिए टाइम तभी होगा जब उनको इंटरेस्ट आएगा। तो कोई टिप्स है, कोई ट्रिक्स है कि जो इस्तेमाल करके वी कैन ग्रैब देयर अटेंशन? तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल आप बता सकते हो? As I said, self branding, I think, is very important. It's not just who you are as a person, but what you do. आजकल हम इतना इंस्टाग्राम करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वी आर एवरीवेयर. सो इफ यूर अ डायरेक्टर एंड यू थिंक लाइक अ डायरेक्टर, गो आउटसाइड एंड शूट अ फिल्म विद योर फोन. आई मीन, कुछ नहीं तो आपके पास किसी को कुछ दिखाने के लिए हो जाएगा कि दिस आई शॉट ऑन माई फोन with no to like no resources at all. This is something that anybody can do at any point of time if they have a phone. So जो भी बोलते हैं ना, I don't have the resources or money to make a film, they they have not put their full 100% into making a film. So I think passion and focus is very important. You have to be focused that this is what I want to do. This is one of the things that people can do. Second is, there are groups on Facebook and LinkedIn that you can join as an aspirant. You can ask people there. You will find people of all industries there. Facebook पे you will find there is a crew call India करके एक group है. You can connect to that group, ask the people, if there is any work or somebody is looking for an intern. Internship actually is again one of the best ways to move forward. Of course, interning it comes with its pros and cons. Like you may not make money as a beginning thing, but you will definitely learn. It's a lot of hard work, but I think everybody should intern on an indie project or a long format project from pre-production to post-production to actually learn the whole process of filmmaking. Second is that they can join the groups online and learn from the professionals who are already there. Again, it involves reaching out. And third will always be putting your foot forward and making a film on your own. Just bringing that director in you before somebody is hired to be a director. So I think that's that. These are the three things where you can learn and put yourself forward. एग्जैक्टली मतलब अभी आपने जो कहा इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है और कहीं से मैं भी कनेक्ट करता हूँ. जैसे आपने कहा कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव, व्हाट रिसोर्सेस यू डोंट हैव. You just take out your mobile phone, start shooting, and make a product out of it, so that uh, potential investor, producer, production company could get an idea ki what kind of knowledge you have, what kind of product you can make. अगर आप small scale पे अपना talent दिखा पाए तो definitely they will have an idea कि if resources are provided to this person, then how he can deliver the end product. तो ये अप्रोच एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आई रियली अप्रिशिएट यू टू मेक अ नोट ऑफ इट कि रिसोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए. अगर आप सचमुच कुछ अचीव करना चाहते हो तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ टू स्टार्ट विथ, और वहीं से आपका जर्नी शुरू हो सकता है. इंद्रनील, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स है या फिर गलतियां हैं जो न्यू कमर्स करेंगे या कर सकते हैं, ये करते हैं, जिसके वजह से कुछ भी पिच होता है किसी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ, तो कौन सी मिस्टेक्स है जो मिस्टेक्स होती है और उसको अवॉइड कैसे करना चाहिए और किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, सो दैट उनके लिए फायदेमंद यह रहेगा कि अगर मिस्टेक्स नहीं होंगे तो वो कन्विंसिंग होगा प्रोजेक्ट. तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स आप बता सकते हो कि क्या मिस्टेक्स हो सकती है? सी फर्स्ट थिंग तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप पहले सीखिए. सी या अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन से सीखिए या फिर पर्सनल ट्रेनिंग से सीखिए, बट आपको पहले सीखना बहुत जरूरी है. जब तक आप सीखते नहीं हो अच्छे से, टेक्निकल नॉलेज आप नहीं लेते हो, तब तक आप किसी को अप्रोच ठीक से नहीं कर पाओगे. आप मिस्टेक्स करोगे ही करोगे. अगर वही चीज अगर आपने टेक्निकल चीजें कुछ सीखी है, मोस्ट ऑफ द टाइम बजट पे बहुत चीजें होती है कि आप इतना बजट क्यों दे रहे हो और ऑल दैट थिंग्स. तो उन्हें कन्विंस करना बहुत जरूरी है टेक्निकली कि ये चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है. हमें अगर लाइट्स चाहिए एक्स्ट्रा, कैमरा अलग अलग टाइप के कौन सा कैमरा यूज करना है, वो अगर हम क्लाइंट को अच्छे से कन्विंस कर पाए
तो आई डोंट थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई मिस्टेक होगी। अगर आपको पहले ही उन चीज़ों का नॉलेज है तो इजीली आप कर सकते हो। यू आर ऑन म्यूट अगेन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन काफी होता है इंडस्ट्री में कि नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, नए नए कंपनीज आएंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। इन सारी चीजों के साथ हर एक प्रोफेशनल को भी अपडेट होना, अपग्रेड होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। इसके रिसोर्सेस कहाँ पे मिल सकते हैं? जैसे शिवानी ने कहा कि आप फेसबुक पेज है सो एंड सो, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। लिंक्डइन पे अलग नेटवर्क है, ग्रुप्स है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, सो दैट इन सारी इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हो और आपको खुद को अपडेट और अपग्रेड कर सकते हो। तो जो सी मैं इस कहूँगा या ये जो चीजें हैं ये आप सी देख के आप सीख सकते हो, नहीं ऐसी बात नहीं, बट देखकर सीखने के लिए भी आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज आपको अगर बेसिक है तो आप देखकर भी सीख सकते हो। लाइक अभी हम लोग भी अभी भी सीख ही रहे हैं। जो जो नई टेक्नोलॉजी आते हैं हम लोग सीखते जाते हैं। हम लोग पहले उसे यूट्यूब पे देखते हैं या फिर टेक्निकल जो कंपनीज होती है वो उसके मेकिंग बनाती है कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है या फिर इसका वर्किंग कैसे। तो वो चीजें देखिए और एक बार यूज करके देखिए पहले खुद, फिर बाद में आप ऑन फ्लोर जाइए। एग्जैक्टली मतलब अगर अपग्रेडेशन करना है तो आप पहले उसका एक्सपीरियंस लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको समझिए। अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हो, जिससे कि करेक्ट। आपको अपग्रेड रहना और अपडेट रहना पॉसिबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि फिनेंशियली ये करियर कितना वायबल है? तो मैं शिवानी को पूछना चाहूंगा, अगर कोई शुरुआत करता है तो उसका फिनेंशियल ग्राफ किस तरीके से होता है? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को किसी भी करियर में काम करना है तो वो फिनेंशियली स्टेबल हो, और रिटेन करना है अगर उस करियर को, तो ये काफी चैलेंजिंग होता है। दैट वी एवरीवन नो कि ये प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम्स यू हैव द प्रोजेक्ट्स, समटाइम्स यू डोंट हैव द प्रोजेक्ट्स, और आपके फिनेंशियल्स किस तरीके से वो डिपेंड करेंगे। तो फिनेंशियल ग्राफ किस तरीके से होता है एज अ जर्नी, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं एस्पिरेंट का जर्नी चालू होता है तब, और Right. जब एक एस्टैब्लिश होते हैं तो उस वक्त पे फिनेंशियल्स कैसे हो सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। See, it's a very dreamy land. Film industry is a very dreamy land. Things can change overnight. It usually doesn't happen overnight. Of course, it takes years and years to build that career and that stage where you earn so much that, for example, I'll give you an example. At least in the ad industry, the smallest director per day will charge somewhere around 85 per day charge. So if they're doing a 2 day shoot, they'll charge 85 into 2. But then the same directors, after years of experience in successful campaigns and work and all, are also charging 15 lakh per day. 85 as in 85,000, 85K. 85,000? Okay, okay. A per 85,000. day And then to start with. per day. To start with, Okay. like a director who's established and a person would like to hire them, a brand, like a good, okay brand, not a very big brand, is usually somewhere around it. 75, 85 is the beginning of it, which goes up to 30 lakh per day as well. Like, for example, I'll give you a name. Shakun Batra will charge a 30 lakh per day for directing a one day of ad films. But in films, it is a little different. In films, it's not as much, and the schedules are longer. Films goes on for, it can go anywhere from a 21-day schedule to 6 month schedule. Like if Bansali is shooting, you know that he's going to take only 2 scenes or one scene per day. So that schedule goes on for 3 months, 4 months, whatever, 294, 300 days as well sometimes. But if it's an indie film, a smaller film, say for example, a 21-day shoot. I'll give you an example. Jab We Met was shot in 21 days. Imtiaz Ali did all the pre-production, whatever, and went to shoot the film. He shot it in 21 days. Didn't make a lot of money out of it, but it turned out to be a successful film later. So for a film like this, indie director can make somewhere around a 2-3 lakh per project, which is not a lot for a
21 days का अगर शूट है इसका मतलब you have to prep for at least 3 months. You have to put in the time in post for about again 2 months for sure. तो आपका 6 महीने तो कहीं नहीं गया to make a indie film, independent film. And to build that as well, you have to again have network and skill set to get a film like that. So the money situation of the industry is pretty complicated. How can you safeguard is invest in yourself again. And I know I'm saying it again. जब आपका self brand होता है ना, people don't hire you only for your talent. Of course, that is important, but people hire for who you are as well. Like you have a name associated with you in terms of a director. Like if I'm a successful director and I can get, I'll give you an example. In Chalang, I was a script supervisor on Chalang, and Rajkumar Rao came to do the film for Hansal Mehta only, and in a lesser price. So what quality I am bringing to the table also matters in the amount of money that I'm going to make, and it is not only your talent. It is whatever else do you bring to the table. So I think money is a little uncertain, but yes, if you keep doing it, you will definitely make money. I need to just highlight one point that as you said कि सिर्फ टैलेंट होना जरूरी नहीं है, वो टैलेंट के Yes, साथ आप क्या एक्स्ट्रा आपके साथ बैग में लेके आ रहे हो जिससे कि प्रोजेक्ट को बेनिफिट हो, दैट विल benefit. गिव Correct. यू द बेनिफिट फॉर द कॉम्पिटेटिव एज. ये काफी Correct. मैटर करेगा, और कंपटीशन है तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना या एक्स्ट्रा मेहनत पुट अप करना या डिलीवर करना कोई भी चीज, Right. ये काफी इंपॉर्टेंट होता है. सेम क्वेश्चन मैं इंद्रनील को पूछना चाहूंगा, एज अ डीओपी फिनेंशियल्स किस तरीके से होते हैं? सी पर डे अगर देखेंगे तो 20,000 मिनिमम आपको मिल सकता है एंड इट गोज अप टू लाइक प्रोजेक्ट जैसे है उस हिसाब से लाइक प्रोड्यूसर का बजट जैसे है उस हिसाब से आप या फिर फिल्म है या फिर एडवर्टाइज है या शॉर्ट फिल्म है उसके हिसाब से आप आगे चार्ज कर सकते हो डिपेंड ऑन योर लाइक स्किल्स कोई भी आपको अगर पे करता है तो वो आपको पहले आपके स्किल्स देखेगा एग्जैक्टली, मतलब इट डिपेंड्स कंप्लीटली कि आपका टैलेंट क्या है और क्या आप डिलीवर कर रहे यस यस अगर आप हो. स्टार्टिंग में इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स फ्री में भी करने पड़ सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली डायरेक्टली कोई अच्छा काम मिलेगा ऐसा होता नहीं है सो आपको स्टार्टिंग स्क्रैच से शुरुआत बिल्कुल करनी पड़ेगी इसके लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर साउंड होना पड़ेगा दैट इज रियली वंडरफुल. मतलब ये सारे टिप्स और ट्रिक्स अपकमिंग जो भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा. विल टेक दिस टू द एंड ऑफ द सेशन ऑलमोस्ट, एंड आई वांट टू अपोलोजाइज दैट आपको काफी कम टाइम मिल रहा है ये सेशंस में. हम लोग कुछ एक्सक्लूसिव सेशंस भी कंडक्ट करेंगे स्पेसिफिकली टू वन सब्जेक्ट ओनली, so that aspirants को ज़्यादा से ज़्यादा information मिले. And in fact we'll be opening the questions answers also, chat section also, और थोड़ा सा ड्यूरेशन हम लोग 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के हम लोग प्लान करेंगे. बट थैंक यू सो मच. टू सम अप द सेशन, आई वांट अ वन लाइनर एज अ डायरेक्टर एंड एज अ डीओपी कि जो एस्पिरेंट डायरेक्टर है उसके लिए क्या एक फाइनल फॉर्मूला हो सकता है, क्या टिप हो सकती है, या गुरु मंत्र क्या हो सकता है? शिवानी. I think the tip is be focused, know what you want, and be clear in your vision. These three things, if you follow, you're sorted. You are going to make a good film and connect with the right people. So, yeah, I think that's about it. Exactly, and right people at the right time as well. I've seen Yes, that right time as well. sometimes, Yeah. yeah, sometimes we approach to the person, but they don't require your services. But at times, Yeah. when it comes to their table, then they get an idea. Okay, ये person है हमारे पास जो ये deliver कर सकता है, तो let's approach it. So it is the Yeah. advice to all of you. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए आपका काम, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग बढ़ाइए और आपके करियर को आगे लेके जाइए. इंद्रनील सर, आपका फाइनल स्टेटमेंट फॉर द सेशन. सी मेरा फाइनल स्टेटमेंट तो एक ही रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए कि आप प्रैक्टिस करिए
सेल्फ डेवलपमेंट करिए। कॉन्टैक्ट्स आप जैसे ही बनाओगे, पहले आपको प्रैक्टिस और सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, वो आप कीजिए, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे बनेंगे और आपको काम भी अच्छा मिलेगा। ग्रेट ग्रेट, मतलब नेटवर्किंग करना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक अच्छा माध्यम है। हम देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां ओवरनाइट बदल जाती है, मतलब दे आर गेटिंग द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी ओवरनाइट। तो वो भी एक माध्यम है जो आपके, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। या फिर जैसे शिवानी ने बोला था कि रिसोर्सेज की आप राह मत देखिए, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कीजिए, और वो रिसोर्सेज में जो भी बेस्ट डिलीवर कर सकते हो उसको डिलीवर करके आप अप्रोच कीजिए, so that people can understand your potential, your capability, and how you can deliver. So thank you so much, both of you. We Thank really you. appreciate your time and the insights for the aspirant people, and we'll definitely would like to contact you again to conduct the exclusive sessions for your respective topics. Thank you so much. थैंक यू सो Thank you. मच। Celeb Rise, Talent Management and Grooming.